गाइस, तो एज वी टोल्ड हम लोग जा रहे हैं पटाया। बीच में थोड़ा हम लोग को भूख लग गया था तो हम लोग रुक के थोड़ा बहुत खाना वाना खा लिए एंड देन थोड़ा फ्रेश भी हो लिया, फेस धो के थोड़ा अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो जर्नी इज़ लाइक 2-3 आवर्स फ्रॉम बैंकॉक टू पटाया। ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत भूख लग गया था बट अभी नाउ वी आर गुड। लुक एट दिस प्लेस, सब कोई तो दिस इज कॉमन प्लेस। यहाँ पर सब रुक के नाश्ता वास्ता करते हैं, फ्रेश होता है। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर हम लोग खाना वाना थोड़ा सा खाएं। ये हाईवे है तो रोड्स आर वेरी गुड। मैंने पहले ही बताया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है इन लोग का, मेनी टाइम्स बेटर देन इंडिया। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा इन लोगों को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखना ही पड़ेगा। बाहर से लोग आएंगे तो दिस इज़ वेरी मच नीडेड। हे गाइस, सो वी आर गोइंग टू पटाया एंड वी हैव विद अस 2 new friends, Jane and Sean. So hey Jane, this is Sean. Hi. So Sean is here for the next 3 months. That's right. And he's from UK. So Sean, like you want to tell something, like how is this country, what all things you've covered? Thailand's awesome. Come along. Thailand's awesome. And Jane is from Thailand itself. Yeah. So Jane, she'll tell us like what all places we should visit. Bangkok. Good food, yeah. Bangkok. Street food, right? Street food. Shopping. Yeah. Shopping is the best. Yeah. So we were on our way and we got to meet them and now we are together going to Pattaya on a Grab cab. Okay, let's reach there and then we'll connect again. Bye. Beverly Hotels, Pattaya. Hey guys, तो फाइनली हम पटाया पहुंच चुके हैं एंड हमारा होटल ऑलरेडी बुक था। सो हमारा होटल है द बेवर्ली होटल पटाया। इट्स अ वंडरफुल होटल, बहुत अमेजिंग है। मतलब हमने ऐसे जब बुक किया था तो सोचा नहीं था कि इतना ऑसम होगा, बट वॉकिंग स्ट्रीट से जस्ट 2 मिनट्स है। वॉकिंग स्ट्रीट पटाया, यू मस्ट हैव हर्ड। सो इट्स जस्ट 2 मिनट्स का आई मीन वॉकिंग है एंड इट्स सो लाइवली अमेजिंग। मतलब हाँ, यहाँ का वाइब देख के इतना मज़ा आ रहा है, यू कैन जस्ट सी आवर फेस। ओके, सो एक्साइटेड वी आर। लोकेशन इज वेरी नाइस, मतलब वो बीच के एकदम जस्ट बगल में है, प्लस वहाँ से इट्स नॉट ओनली अबाउट द बीच, वॉकिंग स्ट्रीट भी जस्ट बगल में है। मतलब द फेमस वॉकिंग स्ट्रीट इन पटाया, यू नो, एकदम बगल में ही है। द होटल लोकेशन इज अमेजिंग। या वी आर रियली हैप्पी विद द Yeah, लोकेशन। with the location. So basically, let me give you a brief. So क्या हुआ, हम कैब बुक कर रहे थे हमारे लास्ट बैंकॉक के होटल से डायरेक्ट टू पटाया, बट देन हमारा कैब कोई रीज़न से कैंसिल हो गया। सो उसकी वजह से वी जस्ट वेंट टू दी बस टर्मिनल कि सो दैट वी कैन टेक एन AC बस एंड कम हियर, बट देन इट वॉज अ लॉन्ग क्यू। सो उसकी वजह से वी गॉट 2 of our friends, Sean and Jane. And with them we shared a cab, taxi. So उसमें हम यहाँ पे आ गए and we met them and they became friends. we are going to meet in the walking street in the evening. देखते हैं क्या होता है. So yeah, anything you want to say? Yeah, let's go to the beach. Like we'll just freshen up and Before we'll go that, to the let beach. us show you the room tour. Yeah, because that is do that. mandatory, right? जहाँ भी हम जाते हैं रूम टूर दिखाते हैं. So room देख लो हमारा. It's good, decent room, and the washroom is very good. So room tour करते हैं.
guys. So as you can see, come we'll start with the washroom. यहीं पे है washroom. See, full white theme जो मुझे बहुत पसंद है. Bathtub भी है. Bathtub है. Minimum but good. Very clean, very neat. One thing that I want to show is this part. Again, यहाँ पर भी see through वाला washroom है. I mean, just look at this. Okay. So whatever the bookings we have made, all are suite rooms. That's why you have this thing. सब में bathtub है, सब में the facilities are good. The room is decent. थोड़ा I mean मतलब हम one night stay करने वाले हैं पटाया में. So उसके हिसाब से it's really good. And the location is They have amazing. a fridge as well. Yeah. A locker. All Bathroom. these facilities. Yeah. TV. And this is the bed. Shall we show them that? Come. Yeah. So it's just that street is the walking street. Yes. Just across that street we have the Yeah, beach Beach. as well. So guys, अब हम ready होने जा रहे हैं and ready to go to the beach. इसी का वेट था यहाँ पटाया के बीच जाना was the most awaited. And after this our next destination will be again Bangkok, back to Bangkok from Pattaya, and then there is Krabi on first. right. And like one more thing we want to add is when you are traveling from Bangkok to Pattaya, there are different ways. Like you can take a bus on the bus terminal, and the buses they're flying every 2 hours. Right? Every 2 hours. So that we can do. Yeah, that you Or- can do, but do try to book it prior. मतलब पहले से book हाँ. करके रखो, so that queue में नहीं खड़े रहना पड़े. Right. For Our us, queue it was very like- long. Yeah, for like us. we could have waited for 3-4 hours easily there. For If us we it had- was हमारे लिए यही था कि हम पहले से book कर सकते थे, but we were not sure that how, Right, from हाँ. where, and also हमने directly cab कर लिया, and luckily we got Sean and Jane. So yeah, हम आ गए share करके. Okay. Then bye then. So guys, basically ये vlog हम यहीं पे finish कर रहे हैं, how we traveled from Bangkok to Pattaya, and then what are the activities and what all we did in Pattaya, वो next vlog में होगा. So watch our space and watch this vlog. Like, comment, share and subscribe. Do not forget to subscribe. Yes, do that please. And we'll be coming up with more interesting videos and vlogs for you guys. Okay then. Bye. Bye bye.